श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 43 तृणावर्तवधम्। त्वामे गता गुरुमरुत्पुरनाथवोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्काम्। तावत् विदूरमुपकर्णितघोरघोषव्याजृम्भि पांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुस्स किल दैत्यवरस्त्रिणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम्। उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्दमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद। तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसु घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः। रोदोपकर्णनवशाद् उपगम्य गेहं क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात्। रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठपाषाण पृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तम् अमुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तम् अलं हसन्तम्। ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठदेह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् आघ्रानम् अम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादिगोप परिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु काम परिशङ्गितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम्। भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव। वातात्मगं दनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो धुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः।